Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn evaluation of double integrals. So here one example is given. We have to integrate this function two times with respect to x and y respectively. So here one question arises that how do we know that which limits are with respect to which variable, that is either 0 to 1 are the limits of integration for variable x or either 0 to 2 are the limits of integration for variable x. So the solution to this question is that when all the limits of integration are constant values, then it doesn't matter, we can pick any limits with respect to any variable. यानी कि जब सारे लिमिट्स आपके कोई कांस्टेंट वैल्यू हो तो आप किसी भी इंटीग्रल को किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पिक कर सकते हो, इससे आपके सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा. बट इफ देयर इज अ वेरिएबल प्रेजेंट इन द लिमिट of integration, then the situation gets changed. We will learn it later. So let us start solving this example. First of all, let us integrate this given function with respect to x with the limits of integration 0 to 2. Integration of x plus y with respect to x. Integration of x with respect to x, that is x square by 2 plus y will remain as it is as a constant, and we have to multiply one x with it because we are integrating with respect to x. Limits 0 to 2 dy will remain as it is. Now we have to do the calculation of upper limit minus lower limit for this portion. Here the integration is done with respect to variable x. So when we calculate upper limit minus lower limit, we put the value of upper limit in place of x only. Similarly, we put the value of lower limit in place of x only. So upper limit, that is 2. When we put 2 in place of x, we get 4 by 2 plus 2 into y. Upper limit minus lower limit. When we put 0 in place of x, we will get 0. Plus again when we put 0 in place of x, we will get 0. So 0 plus 0, that is 0. So we get 2 plus 2y dy. So here half of the portion is completed. We have done integration with respect to variable x with the limit point 0 to 2. Now next we will do integration with respect to variable y with the limit 0 to 1. So integration of 2 with respect to y, 2 will remain as it is as a constant, and we have to multiply one y plus again 2 will remain as it is as a constant, and the integration of y with respect to y is y square by 2 with the limit point 0 to 1. Now we have to do upper limit minus lower limit, that is in place of y. First we put 1 and then minus in place of y we'll put 0. So when we put 1 we get 2 into 1 plus 1 square. This is upper limit minus lower limit. Y की जगह पे 0 रखेंगे तो 0, again 0, 0 plus 0, that is 0. So finally we get 2 plus 1 which is equals to 3. So this is your final answer. Okay. Now let us take one more example based on double integral. Here is one more example based on the double integration. Let us start solving this. First of all, I am integrating with respect to x the complete function, that is root over of 1 minus x square into root over of 1 minus y square. Now next, as we are doing integration with respect to x, so this part, that is 1 upon root over of 1 minus y square, will remain as it is as a constant. So we can
write this out of the integral. Now integration of 1 upon root over of 1 minus x square with respect to x is sine inverse x. I hope you all know this formula. Now we have to do upper limit minus lower limit calculation. Upper limit is 1 and lower limit is 0. So sine inverse of 1 minus sine inverse of 0 dy will remain as it is. Okay. What will be the value of sine inverse 1? Sin theta की value 1 कब मिलती है? 90 डिग्री पे. तो in place of 90 degree I can write pi by 2. Similarly sin theta की value 0 कब मिलती है? 0 डिग्री पे. So in place of sin inverse 0 I can write 0. That is pi by 2 minus 0. On solving this, we'll get pi by 2. Pi by 2 is again a constant. So we can write it outside the integral. Now we have to integrate the function 1 upon root over of 1 minus y square with respect to y. Again using the same formula, the value of this is sine inverse of y with limit point 0 to 1. On doing upper limit minus lower limit, at the sine inverse of 1 minus sine inverse of 0, we'll get pi by 2 minus 0, which is equals to pi square by 4. Okay. Same calculation is done here again. Sine inverse 1, that is value of sine theta is 1 when degree is 90, that is pi by 2. Similarly, value of sine theta is 0 when degree is 0, that is 0. So pi by 2 minus 0, that is pi by 2. Pi by 2 into pi by 2, that is pi by 2. Sorry, pi square by 4. So this is one more example based on evaluation of double integration. तो आई होप कि आपको डबल इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन क्लियर हो गया होगा. आज हमने दो एग्जांपल्स किए. एक इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, जब सारे लिमिट पॉइंट्स आपके कांस्टेंट हो तो आप किसी भी लिमिट पॉइंट्स को किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पिक कर सकते हैं. थैंक यू. तो चलिए एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं. जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सारी वैल्यूज कांस्टेंट में हो तो हम किसी भी लिमिट्स को किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पिक कर सकते हैं. बट आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पे एक लिमिट में कांस्टेंट की जगह पे वेरिएबल प्रेजेंट है. तो इस सिचुएशन में आप किसी भी लिमिट को किसी के लिए भी पिक नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना होता है. तो सबसे पहले अगर हम x की बात करें, यानी कि x के कौन से लिमिट्स हैं, तो x इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल, बट x इज इक्वल टू x इज नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स जब यहाँ पे वेरिएबल x प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज द लिमिट पॉइंट्स ऑफ y. हियर y is equals to 0 and y is equals to x is there. That means 0 to x are the limit points with respect to y. उसी तरीके से ये जो लिमिट्स थी 1 to 2, ये अब किसके लिमिट पॉइंट्स हो जाएगी? y की. दैट इज y इज इक्वल्स टू 1 to y इज इक्वल्स टू 2. तो इस तरीके से अगर आपका कभी भी कोई वेरिएबल प्रेजेंट हो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में, तो आप देख लीजिए वो कौन सा वेरिएबल है. अगर वो x है तो वो x के बराबर नहीं हो सकता है. दैट मीन्स ये जो लिमिट पॉइंट्स होंगी वो y की होगी. सिमिलरली अगर y है तो वो y के बराबर नहीं हो सकता, वो लिमिट पॉइंट्स आपकी x हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 0 to x, जैसे कि हमने समझा कि ये लिमिट पॉइंट्स y के हैं, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, dx will remain as it is. Sorry, these are the limits from 1 to 2 and this is from 0 to x. Okay, so let us solve. Now integration of 1 upon x square plus y square with respect to y. What is the formula? 1 upon x tan inverse y upon x. This is very basic formula of integration. Again, I hope you all know this formula. Now we have to do upper limit minus lower limit calculation. Here the integration is done with respect to y variable. So in place of upper limit,
In place of y we will put upper limit x. Similarly in place of y only we will put lower limit 0. 1 upon x will remain as it is. So upper limit यहाँ पे है x, तो सबसे पहले हम लिखेंगे upper limit यानी कि x upon x माइनस लोअर लिमिट करना है, तो tan इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट आपके 0 है, तो हो जाएगा 0 upon x. dx will remain as it is. 1 to 2 1 upon x. Tan inverse x upon x will get 1 minus 1 upon x. Tan inverse 0 dx will remain as it is. Again tan inverse 1, that means tan थीटा की वैल्यू 1 हमको कब मिलती है 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4. सो इन प्लेस ऑफ tan inverse 1 आई कैन राइट पाई बाई 4. सिमिलरली tan inverse 0, that means tan थीटा की वैल्यू 0 हमको कब मिलती है 0 डिग्री पे, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 0. So on proceeding we'll get integration 1 to 2 1 upon x into pi by 4 minus 0 dx. Again pi by 4 is a constant value, so हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले आते हैं. 1 to 2 इंटीग्रेशन अब किसका करना है 1 upon x का with respect to x. Again I am using very common formula of integration, that is integration of 1 upon x is log x with limit points 1 to 2. Now I have to do upper limit, that is 2, minus lower limit, that is 1. We all know the value of log 1 is 0. So finally the answer is pi by 4 log 2. This is your final answer. तो हमने आज दोनों ही टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व किए. पहले जिसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर पूरी कांस्टेंट वैल्यू हो तो, और सेकंड ये एग्जांपल जिसमें आपके लिमिट्स में वेरिएबल प्रेजेंट है. तो दोनों तरीके से हमने देखा. आई होप अब आपका कंसेप्ट इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स क्लियर होगा. थैंक यू.